Hello everyone, Namaskar. This is the third video in the Common Sense and UPSC series. The playlist can be found in the video description. इसमें हम बात करते हैं कि भाई प्रीलिम्स में हर साल 10 से 15 सवाल ऐसे आते हैं जो आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो. कॉमन सेंस यहाँ पे डज नॉट मीन कि आपको एब्सोल्युटली ज़ीरो नॉलेज है, बट कि अप्लाइड नॉलेज के थ्रू, इनडायरेक्ट नॉलेज के थ्रू या किसी ऑप्शन से एलिमिनेट करने के थ्रू आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इवन दो यू डू नॉट हैव द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन एज डिमांडेड बाय द क्वेश्चन. Today we'll be talking about prelims 2020. We've already covered 2018 and 2019. The paper will be set A. Again यहाँ पे 12 क्वेश्चंस हैं जिनमें 24 नंबर आपको टोटली, बट क्योंकि प्रोबेबिलिटी रहती है कुछ क्वेश्चंस ऐसे यहाँ भी रहेंगे जहाँ पे इट्स डिफ़िकल्ट टू से फॉर श्योर कि भाई क्या होगा. तो दैट्स वाई कम से कम 15 से 18 नंबर आप एक्स्ट्रा ले सकते हो जस्ट बाय यूजिंग सिंपल लॉजिक. Right, so let's begin. In India, the Legal Services Authority provide free legal services to which of the following types of citizens? Persons with annual income of less than rupees 1 lakh. Okay, seems likely. क्योंकि मतलब of all the three statements, मतलब कुछ ना कुछ 4 statements यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आना चाहिए. तो seems okay. Transgender with an annual income less than 2 लाख. Okay, I'm not sure. तो टेक बात करूँ तो अगर यहाँ भी श्योर नहीं, यहाँ भी श्योर नहीं. मेंबर ऑफ ओबीसी विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 3 लाख, तो ओके, डजंट सीम लाइकली कि पहले जो दो हैं दोज आर वेरी वेरी डिफरेंट, एंड ओबीसी विद 3 लाख मतलब इतना अलग से क्यों नहीं समझ आ रहा. तो तीसरा तो मतलब सीम्स मच लेस लाइकलियर देन इवन द फर्स्ट एंड सेकंड. एंड देन देर इज ऑल सीनियर सिटीजन्स. तो ऐसे केसेस में जब एक्सट्रीम स्टेटमेंट होती है तो आपको क्या करना है कि एग्जाम्पल सोच के देखना है. फॉर एग्जाम्पल, रतन टाटा इज़ अ सीनियर सिटीजन. रतन टाटा, कैन ही गेट फ्री लीगल? एक तो ही डजंट नीड फ्री लीगल सर्विस, बट कैन ही गेट इट इफ रिक्वायर्ड? डजंट सीम लाइकली. इवन अमंग सीनियर सिटीजन देर शुड बी सम डिफरेंशिएशन विच इज़ जनरली द केस. तो अगर 4 को मैं एलिमिनेट कर देता हूँ तो द ऑप्शन इज 1 and 2 and 2 and 3. And of the given options 1 and 2 seems likelier than 2 and 3. क्यों? क्योंकि person with income less than 1 lakh seems a lot more likely than OBC with less than 3 lakh. So it is a relative question, and relatively A is a better option over here. Right, again द आइडिया ऑफ दिस सीरीज़ इज़ कि भाई कॉमन सेंस से हम किस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं. हम यहाँ पे बिल्कुल ये बात नहीं कर रहे कि नहीं एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए. मुझे नहीं पता, मुझे इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता है. तब भी अगर मैं सोचूंगा इस सवाल के बारे में तो दिस इज़ हाउ आई वुड थिंक अबाउट इट. राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ पर्सन हु इज़ एलिजिबल टू वोट, ओके, मीनिंग एलिजिबल टू वोट इज़ 18, can be made a minister of state for 6 months even if she is not a member of the legislature of that state. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि नेचुरल सी बात है, अगर आपने लक्ष्मीकांत बेसिक लेजिस्लेचर पढ़ा है, देखा है आपने, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि भैया तो 21 या 25 साल की एज लिमिट होती है टू गेट इलेक्टेड एज एन एमपी. जस्ट बिकॉज यू कैन वोट डजंट मीन दैट यू कैन गेट इलेक्टेड एटलीस्ट टू स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट. You can probably become a Zilla Parshad, but I'm not really sure. So again, first statement wrong. According to the Representation of People Act 1951, so now this obviously statement becomes a lot easier for everybody. Why? Because of the Rahul Gandhi case recently. But यहाँ पे question यहाँ पे ये था, imprisoned for 5 years, right? तो 5 years can be confusing. अब पता है बिकॉज ऑफ द रिसेंट केस कि इट इज़ 2 years, कि 2 years से ऊपर होता है तो डिस्क्वालिफिकेशन होती है. बट द क्लू ओवर हियर इज परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड. इसका क्या मतलब है कि अगर एक बारी कन्विक्ट हो गए तो फिर कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, विच इज़ इन द केस, विच शुड नॉट बी द केस. क्योंकि अगर आपने प्रिजन जाके वापस आ गए, यू हैव री इंटीग्रेटेड इन टू सोसाइटी, तो इवन बाय लाइक द बेसिक लॉजिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यू शुड बी गिवन अ चांस अगेन. देर कैन बी अ कूल ऑफ पीरियड, बट परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड तो बहुत ही रेयर केस हो गया. तो दैट मेक्स की सेकेंड स्टेटमेंट तो डेफिनेटली गलत है. फर्स्ट स्टेटमेंट वी नो क्योंकि बेसिक आपने लक्ष्मीकांत भी पढ़ी है तो वो आती है, बट सेकेंड स्टेटमेंट में बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन ये भी गलत है यहाँ पे कि 5 year नहीं होता,
ये 2 ईयर होता है, बट द परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन इज द पार्ट विच आई वॉन्ट टू हाईलाइट कि इसकी वजह से हमने सेकेंड स्टेटमेंट को एलिमिनेट किया है, विच मेक्स द करेक्ट आंसर ओवर हेयर एज डी. राइट. Next question. The President of India can summon a session of Parliament at such place as she thinks fit. Right. Okay, maybe. I'm not sure. Parliament में बुलाना होता है या कहीं और बुला सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, घर पे बुला सकते हैं. But the President is the one to summon. तो देखते हैं आगे क्या चल रहा है. The Constitution of India provides for 3 sessions of the Parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all 3 sessions. तो कॉन्स्टिट्यूशन में जनरली आप देखोगे कि आई एम नॉट श्योर एग्जैक्ट क्या है, क्यों है, कैसे है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस होती हैं दोज आर फ्रेमिंग प्रोविजंस कि मतलब इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए. एंड व्हाट दैट सेज, मतलब एक तो मुझे पता है कि साल में 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के. वन इज़ द बजट सेशन, देन देर इज़ द मानसून सेशन एंड देन देर इज़ द विंटर सेशन. बट इज इट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? नो. व्हाट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज कि पार्लियामेंट शुड मीट एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर. और इट डजंट इवन से कि एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, इट सेज कि ऐसा कोई 6 महीने का पीरियड नहीं जाना चाहिए जहाँ पे पार्लियामेंट नहीं मिल रहा. सो दैट बाय डिफ़ॉल्ट मीन्स कि एटलीस्ट 2 बार तो मिल रहे हैं, उससे ज़्यादा जितनी बार रिक्वायरमेंट है जैसे है. तो ये जो चीज़ें हैं, ये वाले जो पार्ट्स हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट गिव यू एग्जैक्ट प्रोविजंस मोस्ट ऑफ द टाइम. It will only give you exact provisions if they have been included because of amendments like GST, right? But in such a case, second statement यहाँ पे हमने गलत करार कर दी है. There is no minimum number of days that the parliament is required to meet in a year. तो statement 3 भी by that same logic, so by that वही same logic वाली चीज़ चल रही है यहाँ पे कि डे स्पेसिफाई नहीं किए गए हैं कि भाई इतने दिन मिलना ही मिलना है, बट ये स्पेसिफाई किया गया है कि 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए. तो टेक्निकली इफ वी टॉक अबाउट इट, यू नो, स्टेटमेंट 3 इज़ फाइन एंड दिस इज़ हाउ वी कैन कम टू दिस पर्टिकुलर आंसर. ये मतलब कॉमन सेंस इतना ज़्यादा इसलिए नहीं है कि आप एलिमिनेट कर पा रहे हो, बट बिकॉज ऑफ द वर्डिंग ऑफ दिस क्वेश्चन इट हैज़ बिन इंक्लूडेड हेयर कि बहुत ज़्यादा एलिमिनेशन नहीं है, बट कंफ्यूज आप ढेर सारा हो सकते हो इस सवाल में, क्योंकि इट्स बिन वर्डेड इन सच अ वे टू एक्चुअली, यू नो, शेक अप योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द पार्लियामेंट फंक्शंस. सो प्रोविज़न अगर आपने पढ़ी है, ध्यान दिया है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसका ये मतलब नहीं है दैट यू नो it should 6 months should not elapse between two meetings of the parliament. That does not mean it is saying कि एटलीस्ट 2 दिन तो मिलना ही मिलना है. वो कहीं नहीं लिखा है. उन्होंने बस इतना बोला है कि 6 महीना नहीं निकलना चाहिए. तो that's that question. Now this is a fun question that came up in 2020. Again, modern history. तो modern history में भी आप you know काफ़ी हद तक ये लॉजिकल गेसिंग एंड रीजनिंग वाली चीज़ें लगा सकते हो. यहाँ पे क्या है कि देशर कथा रिटन बाय साखाराम गणेश देवस्कर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नाउ व्हेन आई वाज गिविंग दिस एक्चुअल पेपर, ना मैंने देशर कथा का नाम सुना था, ना मैंने साखाराम गणेश देवस्कर का नाम सुना था. एंड इट वॉन्ट अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट्स हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ माइंड. अब मैंने किताब नहीं सुनी, मैंने ऑथर नहीं सुना, तो अब मतलब क्या करूँ, व्हाट डू आई डू? सो I just read the question and not even in the first or second round, I read this in the third round कि मेरे पास थोड़ा टाइम रह गया था and अब मैं देख रहा था कि भाई कौन से क्वेश्चंस रह गए. एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जो आपको फर्स्ट राउंड में तो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए, सेकंड राउंड में मे बी, थर्ड राउंड में ट्राई कर सकते हो. फर्स्ट राउंड में शॉर्ट होते हैं, सेकंड राउंड में 50-50 होते हैं, क्योंकि अब भले कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में तो क्या करें. सो इन दिस क्वेश्चन द की इज दिस स्टेटमेंट, द यूज ऑफ देश बाय देवस्कर. नाउ anybody who has traveled to Maharashtra or is from Maharashtra will realize कि Deoskar is a Marathi name or is found in that region, may not be Marathi, I'm not particularly sure, but उस इलाके का नाम लगता है. and Marathi writing about Bengal doesn't seem likely. And if you eliminate the third statement, there is only one correct answer over here. तो ये मतलब एक ये वो होता है लीप ऑफ फेथ वाली चीज़ है यहाँ पे कि लॉजिक हम लगा के ये चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि भाई हाँ यार, देवस्कर probably won't be writing about Bengal. There can be an exception, but
सच एन एक्सेप्शन, इफ इट्स आस्क्ड कंसिडर इट योर बैड लक, बट इस तरीके से आप लॉजिकल लीप ऑफ फेथ एक ले सकते हो. एंड दैट इज़ व्हाट दिस एग्जैक्ट सीरीज इज ऑल अबाउट, कि भाई कॉमन सेंस कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो पेपर के बीच में. सो दिस इज अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज्ड हिज सब्जेक्ट्स थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन. तो एक तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन इज जनरली द राइट आंसर, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट. बट एक बार फिर भी देख लो. नाउ if you read this, whoever praises his religious sect or blames other sects out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, rather injures his own sect very severely, sounds very Buddhist. And if Buddhist, then obviously we know that the correct answer should be Ashoka. मेरे को नहीं पता किसने लिखा है, ऑब्वियस सी बात है यार. मतलब I cannot remember all inscriptions, I cannot remember what everybody said XYZ, but I can relate that this sounds Buddhist, and Ashoka, of all of these kings and rulers over here, Ashoka was the only one that was Buddhist. Coming to question 44. Now, this is another one of those questions that requires some basic science का understanding. बेसिक साइंस कैसे चाहिए यहाँ पे, मतलब एस का ही क्वेश्चन है ये. हेल्थ टेक अगर ट्रेंड की बात करें या थीम की बात करें, तो जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग और स्पर्म्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट. तो जेनेटिक चेंजेस जनरली हाँ, मतलब किसी भी सेल में आप कर सकते हो. एग्स और स्पर्म वाले सेल में भी आप कर सकते हो जेनेटिक चेंजेस. तो सीम्स ओके. अ पर्सन्स जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज. तो मतलब ये भी काफ़ी बार बात होती है, अगर आपने एथिक्स में भी कहीं पढ़ा हो तो यू नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन, यूजेनिक्स, इज देयर इज अ नेम फॉर दिस, यूजेनिक्स. दिस इज एसेंशियली व्हाट यू नो हिटलर वाज ट्राइंग टू डू इन अ लाइक XYZ मैनर, कि भाई यू नो जीन क्लेंजिंग. बट एडिटिंग के थ्रू भी ये चीज़ की जा सकती है. तो potentially possibly second statement is also correct. And then if we go to the third statement, human induced pluripotent stem cells can be injected into the embryo of a pig. Now this is an extreme statement कि भाई मतलब human stem cells, एक तो सबसे पहले pluripotent and multipotent, there are two types of them, you can check out exact क्या है. But you know, inducing human cells into pigs, I don't know. मतलब I have heard कि some of the medicines that are ready for human trials are first tested on pigs and rats, but working the other way around, not really sure. Even though then I had heard somewhere कभी कभार ऐसे मतलब वो random खबरें नहीं आती थी उड़ती उड़ती कि भाई you know ट्रांसप्लांट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो पिग्स के साथ मैच करता है, XYZ करता है. तो देर सीम्स टू बी सम रिलेशन, बट आई एम नॉट एट ऑल श्योर, क्योंकि अब लाइक ऐसा रैंडम कहानी के ऊपर बैठ के यू नो अटेम्प्टिंग अ पेपर प्रीलिम्स में अनलाइकली. तो लेट्स जस्ट लाइक लीव इट एट दैट. बट 1 and 2 कहीं ऑप्शन ही नहीं है. मतलब बाकी अब मैं ऑप्शंस में आऊँ तो अगर 1 सही है तो लाइक 2 भी सही होना चाहिए. एंड if in such a case what's happening is कि like this is the only option that's left. Well, I am not sure about 3 at all. I really don't know about 3. And मतलब if I had known I would have done something else. But जितना मुझे पता है जेनेटिक एडिटिंग के बारे में, जीन एडिटिंग के, जीनोम एडिटिंग के बारे में, 1 and 2 should both be correct. And in that case the answer becomes D, even though I don't know the third statement. Right? What is the importance of using pneumococcal conjugate vaccine in India? These vaccines are effective against pneumonia as well as meningitis and sepsis. Okay, होगा, पता नहीं. Not really sure. I've heard of the vaccine, but कौन कौन सा disease करता है, कितना, कैसे, not sure. Dependence on antibiotics that are not effective against drug-resistant bacteria can be reduced. Can be reduced. Now again, very very potentially true statement. Can be reduced. Can तो हाँ मतलब हो तो सकता ही है. ये नहीं बोल रहा है कि it will be reduced, it should be, must be, those kinds of statements are not here. It says just can be reduced. Okay. The vaccines have no side effects and cause no allergic reactions. This is obviously wrong. No vaccine, ऐसी कोई vaccine नहीं है which does not cause side effects, which does not cause some allergic reaction. It can be something as simple as कि बुखार हो गया तो like COVID vaccine के साथ everybody knows कि like there were some basic side effects, there were some advanced side effects, there were some rare side effects, so there were multiple. But
every vaccine has some or the other side effect. Why? Because the vaccine is fighting against an antibody or an infection within your system, and in such a case it will have some side effect. तो 3 को अगर मैं एलिमिनेट करता हूँ यहाँ से, तो इट बिकम्स 1, एंड तो 1 तो करेक्ट है ही है. एंड यहाँ पे इट इज़ बेटर टू मार्क 1 and 2. वाई? बिकॉज कैन बी रिड्यूस्ड. तो 50-50 में एटलीस्ट क्वेश्चन करना तो बनता ही था, ए या बी में से कोई ना कोई एक मार्क तो करके आओ. बट इन दिस केस 2 सीम्स वेरी लाइकली, कैन बी रिड्यूस्ड. हाँ, हो सकता है. लाइक इन 2019 का पेपर वेर वी सो दैट सम रेप्टाइल्स, सम स्नेक्स, हाँ जी हाँ, कोई ना कोई तो हो ही सकता है. तो हेयर ऑल्सो समथिंग कैन बी डन. सो अगेन, बेटर ऑफ द 2 ऑप्शंस वी हैव चोजन ओवर हियर. खराब हो सकता है, गलत हो सकता है. Right, so this is one of those questions which talks about a lot of specific data, but the time frame is it's saving grace. So after the 1991 economic liberalization, consider the following statements. After 1991 क्या हुआ है? So essentially what it's talking about is a 30-year period, because this is a question for prelims 2020. तो 1991 से 2020, that's a long time. Worker productivity increased in urban areas while it decreased in rural areas. So this doesn't seem likely. Why? For the very simple reason that urban areas में increase हुआ है. Sure, we know that after 1991 reforms, Indian economy has been led by urban growth, services sector, and like all of those things. Fine, but that does not mean that agricultural and allied economy has not grown. It might have grown slower. Well, it might have grown at 3%, 4%, whereas the urban economy might have grown at 10%, 12%, but it has still grown, right? So economic growth agar chal raha hai, so definitely there should have been an increase in worker productivity also. Why? Because there has been tech transfer, there has been digitization, there has been a lot of penetration of mobiles, so information dissemination. Worker productivity definitely has increased. At least 30 साल के पीरियड में 1991 में जितनी थी उससे तो ज़्यादा ही होगी. तो दैट वी नो इज हाउ वी कैन गो अबाउट द फर्स्ट स्टेटमेंट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट से ही अगर हम देखें तो ओके, इसने तो सेकंड भी रॉन्ग कर दी, यहीं की यहीं. द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन द वर्क फोर्स स्टेडिली इंक्रीज्ड. तो दैट इज़ अनलाइकली. वाई? बिकॉज वर्क फोर्स जैसे जैसे हमें पता है कि ओवर द लास्ट 20-30 ईयर्स India has been increasingly growing urban, and that urban areas ka workforce is increasingly being brought into the mainstream. Whereas we also know there is disguised unemployment, there is underemployment, all of these problems exist. अगर economy आपने basics पढ़ा है तो ये कुछ terms हमें पता है. तो steadily increased माने कि year on year rural areas का workforce percentage has increased, which seems unlikely. So here we'll also mark this as wrong. Now this means that option 3 is definitely correct. Why? Because there are only those 2 options that are left. But let's look at option number 4, because that is where the question is being decided. Anyhow, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं तो 50-50 शॉट है, लेना तो बनता है. नहीं पता फोर्थ के बारे में भी तो भी you should take a shot. But let's look at the fourth option. The growth rate in rural employment decreased. Right? कि over a period of 30 years, growth rate in rural employment decreased. This seems likely. This seems likely for a very simple reason, which is exactly what we talked about over here. कि urban में growth rate has been increasing. कि पहले urban में growth rate होता था अगर 5%, 7%, तो now it is 12%. But rural में if it was growing at 7%, now it is probably growing at 5%. It's still growing, but it is growing slightly slower than before. Why? Because the impetus towards services has been much, much, much faster. Again, दो प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो सकती है कि भाई it's talking about still a 30-year period, and growth rate in rural employment has been decreasing or has not increased for that entire 30-year period. मतलब seems to be a tough call, and ideally logically अगर देखो तो C seems like a better option over here, but the correct answer in this case is over B, 3 and 4.
तो दिस इज़ वाई यू नो दीज लॉजिकल एलिमिनेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आती ही है, बिकॉज इन द हीट ऑफ द एग्जाम आर्ग्यूइंग विद योर सेल्फ कि नहीं 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 ऐसा तो ऐसे ही हुआ होगा, हम यहाँ बैठ के वी कैन हैव अ डिस्कशन कि भाई अच्छा नहीं ऐसे है वैसे है यूँ है, बट इन द हीट ऑफ द एग्जाम टेकिंग दिस कॉल दैट आई एम गोइंग टू मार्क बी इंस्टेड ऑफ सी, where B is not very convincing. So that becomes a problem, which is why, in the beginning we also talked about the probability. Coming to the next question. Under cyber insurance for individuals, which of the following benefits are generally covered? Generally covered, in addition to payment for the loss of funds and other benefits. Cost of restoration of the computer system in case of malware disrupting. Seems likely insurance का मतलब यही होता है. Cost of a new computer if some miscreant willfully damages it if proved so. Doesn't seem likely. Like cyber insurance है, computer cyber insurance for individuals. I don't know, मतलब कंप्यूटर तो रिप्लेस नहीं करते हैं एंड मतलब दैट इज़ द बेसिक लॉजिक दैट essentially was in my head when I was writing this prelims का पेपर. एक कंप्यूटर तो रिप्लेस नहीं होता होगा, and if that is the line of argument that you take, the general idea is कि बाकी स्टेटमेंट्स पे एक बार चेक कर लेते हैं लाइकलीहुड क्या है. कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ स्पेशलाइज कंसल्टेंट टू मिनिमाइज द लॉस इन केस ऑफ साइबर एक्सटॉर्शन. सीम्स लाइकली. इंश्योरेंस का मतलब है कि भाई हाँ मतलब रिकवर करना है डेटा, इंश्योर किया था तो भाई कोई बंदा हायर किया रिकवर करने के लिए, वो महंगा है तो दैट इज द कॉस्ट बीइंग बोर्न बाय इंश्योरेंस. कॉस्ट ऑफ डिफेंस इफ एनी थर्ड पार्टी फाइल्स अ सूट. फेयर इनफ. Generally that is how insurance works. So 1, 3 and 4 are seeming like likely statements, and 2 seems an unlikely statement. So even if I don't know, I would like to go with B, and that is the correct answer in this case. कि भाई मतलब इंश्योरेंस में जनरली ऐसा तो नहीं होता कि भाई आपको पूरा नया कंप्यूटर ला के दे देंगे. डैमेज क्या हुआ है उतना आपका रिप्लेस कर देंगे. इफ़ यू हैव टू हायर समबडी टू गेट सम डेटा आउट, दैट विल बी कवर्ड, बट पूरा कंप्यूटर तो रिप्लेस नहीं होता, unless of course you've bought an expensive set of insurance, which brings us back to generally covered. क्योंकि क्वेश्चन में भी ये मान के चले थे वो लोग कि भैया ऐसा भी कोई ना कोई सोच लेगा कि भैया अगर मैंने महंगी इंश्योरेंस खरीद ली, मेरे में कंप्यूटर भी कवर होता है, देन व्हाट. तो जनरली कवर्ड का मतलब है कि जनरली दिस इज नॉट कवर्ड, जनरली स्टेटमेंट 2 इज नॉट कवर्ड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अदर थिंग्स आर कवर्ड. Now, this is also a good question. Under the Kisan Credit Card Scheme, short-term credit support is given to farmers for which of the following purposes? Now, the key is short-term credit support. किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम अगर आपको नहीं भी पता तो भी शॉर्ट टर्म क्रेडिट के बारे में देखते हैं क्या सीन है यहाँ पे. वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस फार्म एसेट्स. फेयर. सीम्स लाइक शॉर्ट टर्म क्रेडिट. परचेज ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर एंड मिनी ट्रक. दिस डज नॉट सीम लाइक शॉर्ट टर्म क्रेडिट. कंबाइन हार्वेस्टर बहुत महंगा आता है, एंड इफ यू टू बाय समथिंग दैट एक्सपेंसिव, दैट इज नॉट शॉर्ट टर्म क्रेडिट. कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स फॉर फार्म हाउस होल्ड्स, अगेन seems like short term credit. Post harvest expense seems like short term credit. Construction of family home and setup of village cold storage facility does not seem like short term credit. तो बस यही है हमारा क्राइटेरिया यहाँ पे कि भाई कोल्ड स्टोरेज बनाना है आपको, कंबाइन हार्वेस्टर यू हैव टू बाय. सो दीज थिंग्स will require long term credit, माने 5 साल का 10 साल का लोन, 5 year 10 year loan you'll require. So doesn't seem to be covered under short term. And if we check, then 1, 3 and 4 is an option available to us, and we'll be very happy to mark it. Now, I didn't know anything about the Kisan credit card scheme. I'd heard of the scheme, but I wasn't sure what it's about. But I do know what short term credit is and long term credit is. अगर ये basic economy का मुझे concept पता है, so then I can do this question, right? So this is the idea previous question में कि supporting topics मुझे पता है, I know something related to it even if I don't know the exact thing. So that's what you have to keep in mind. Now this is a fun question again. With reference to the Indian elephants, consider the following statements. Now, if you know anything about elephants, then you know that the first statement is correct. The leader of an elephant group is a matriarch. इतना तो I'm sure everybody has seen Discovery Channel, National Geographic, XYZ, कि matriarch होती है the leader of the elephant group. Maximum gestation period can be 22 months. Okay, not sure. इतना I haven't seen Discovery to be sure about this. But let's look at the other statements.
an elephant can normally go on calving till the age of 40 years only. Again, I am not particularly sure if that is the case. And among the states in India, the highest elephant population is in Kerala. तो यहाँ पे अब ऑप्शंस पे हम जाएं तो फर्स्ट स्टेटमेंट आई नो इज डेफिनेटली करेक्ट. Because of that, I am sure कि like the answer is between A and D. And between A and D, I'm not really sure about what is going on कि भाई क्या है क्यों है. बट शॉर्ट तो यहाँ लेना है क्योंकि 50-50 अपना ऑप्शन आ गए हैं एंड 50-50 पे वी वांट टू ऑलवेज टेक अ चांस. तो लेट्स जस्ट लॉजिकली थिंक अबाउट दिस कि among the states in India, highest elephant population is in Kerala. This is the fourth statement. And if you have studied environment, आपने देखा है तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की बहुत सारी साइट्स शंकर आयस की जो इन्वायरमेंट वाली बुक है उसके एंड पे दी हुई होती हैं. इवन इफ यू नॉट गॉन थ्रू इट, एटलीस्ट यू नो कि भाई कौन कौन से स्टेट्स हैं या एलिफेंट कॉरिडोर्स कहाँ कहाँ हैं. दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स यू शुड हैव एटलीस्ट सीन. कि बात अगर मुझे करनी है तो विच आर द स्टेट्स दैट आर इन कंसिडरेशन. सो आई नो दैट कर्नाटका इज़ वन स्टेट इन कंसिडरेशन. आई नो तमिलनाडु इज़ अ स्टेट. Kerala is obviously there. Assam is there. West Bengal is there. So all of these states, then Jharkhand, and I'm not sure about Jharkhand all that much, but मतलब ये शुरू के 4-5 states जो हैं इनके बारे में तो देखा है पढ़ा है कि lot of elephant reserves over there or elephant corridors in these states. तो highest elephant population अगर कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, असम, वेस्ट बंगाल में बात करें तो वेस्ट बंगाल तो ऑब्वियसली डजंट सीम लाइकली. वाई? बिकॉज वेस्ट बंगाल में पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ टू हाई. तो लाइक द पीपल कॉन्फ्लिक्ट टू मच इशू. असम कैन बी. मानस, काजीरंगा, both of them are known to have elephant populations. Between Karnataka, Tamil Nadu and Kerala, now Tamil Nadu again doesn't seem likely. Very industrialized state or very very developed in the regions where it has some wildlife sanctuaries. Generally, Tamil Nadu has wildlife sanctuaries around its borders with Karnataka and Kerala. So it's between Kerala and Karnataka and Assam कि भाई इन तीनों के बीच में one of the states should have the highest elephant population. And अगर सिर्फ साइज ऑफ द स्टेट या मतलब रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से बात किया जाए तो दैट आई नो दैट कर्नाटका हैज़ अ लॉट मोर ऑफ दैट. एंड इट्स स्टिल डाइसी, नॉट वेरी श्योर क्या करना है कैसे करना है. तो 50-50 अगर शॉट लेना है ए एंड डी के बीच में ही लेना है तो यहाँ पे आई पर्सनली थॉट ऑफ दिस इन दिस पर्टिकुलर मैनर कि अगर केरला, असम, कर्नाटका इनके बीच में मुझे चूज़ करना है, दिस इज़ माई चॉइस, आई वुड टेक अ बेट अगेंस्ट केरला. कि आईड से कि कर्नाटका इज़ द स्टेट विच हैज़ द हाइएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन. आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो. आई एम जस्ट गोइंग बाय द आइडिया कि कर्नाटका हैज़ अ लॉट मोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स and it has a larger area, so ideally it should have more elephants. That was the entirety of my logic when I was giving this paper in the exam. And with that I did A and B, which is the correct answer over here. But it is difficult to think of the choice between A and D. तो लॉजिक मैंने आपको बताया कि मैंने किस तरीके से सोचा था. मे नॉट ऑलवेज अप्लाई, बट सी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को भी कहीं ना कहीं आप यूज़ कर सकते हो. एंड दैट इज़ द एंटायर पर्पज़ ऑफ दिस सीरीज़ कि इवन इन प्रीलिम्स 2023 यू विल फाइंड सम क्वेश्चंस जहाँ पे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप इस्तेमाल कर पाओगे. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 93 विच वॉज सो अब्जर्ड कि लाइक क्या ही किया जाए इसका. इन दिस क्वेश्चन ocean mean temperature, which the following statements are correct. OMT is measured at up to a depth of 26 degree isotherm, which is at 129 meter in the southwestern Indian Ocean during January to March. This is too specific. इतना स्पेसिफिक तो मतलब कुछ ही नहीं होता है कि मतलब 26 डिग्री का आइसोथर्म, 26 डिग्री आइसोथर्म विल बी फाउंड एट 129 meters only in the southwestern Indian Ocean is a huge area.
what are you talking about? Doesn't seem likely at all. This is an absurd statement. Now, I understand during the paper it may seem like you was like, maybe if it is, but all that you have to do is look at the map. And if you look at the map, you will see that the साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन कि अगर 4 क्वाड्रेंट्स में भी मैं इसे डिवाइड करूँ, इट इज़ ह्यूज. एंड उसमें इतना स्पेसिफिक पॉइंट मारना कि भाई इसी इलाके में यहीं होगा, सीम्स अनलाइकली. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, द सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं अब यहाँ पे. OMT collected during January to March can be used in assessing whether the amount of rainfall in monsoon will be more or less during a certain long term mean. So this seems likely, right? Why? Because if you've read basic geography तो आपने monsoon पढ़ा होगा. Monsoon के साथ साथ आपने पढ़ा होगा El Nino, La Nina, and Indian Ocean Dipole, and Madden-Julian oscillation. These are multiple concepts in geography. तो what I know is कि हाँ, अगर यहाँ पे टेम्परेचर का थोड़ा डिफरेंस होता है साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन में, तो दैट कैन इम्पैक्ट मॉनसून. एग्जैक्टली कितना, क्यों, क्या, कैसे नहीं पूछा, बट इट कैन इम्पैक्ट, राइट? वेदर मोर और लेस, तो ये भी नॉन स्पेसिफिक है कि भाई ये ज़्यादा होगी कम होगी पता नहीं, बट लाइक हाँ पता चलेगा कुछ ना कुछ. देन इट सीम्स लाइकली. And first statement seems unlikely, and the correct answer is actually over here, B. तो इतना स्पेसिफिक अगर आपको कोई स्टेटमेंट दी गई हो कि भाई 129 मीटर पे 26 डिग्री आइसोथर्म्स, लाइक दैट सीम्स गुड एलिमिनेशन. विच ब्रिंग्स अस टू द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2020. वाई, मतलब इसको 59 को अलग से निकाल के क्यों रखा है? बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन फॉर मी. क्योंकि जब मैं ये पेपर दे रहा था तो मैंने ये क्वेश्चन देखा एंड आई लॉस्ट इट. आई सिंपली लाइक कि भैया ये क्या सवाल आ गया. मीनिंग by this point I have studied for UPSC civil services exam for like 5-6 years. This is my 6th attempt, and I've never heard of district central cooperative banks. I have never heard of this term, and because of that reason I looked at the first option and I left it. But like that is the similar thing that happened with the Deoskar question कि Sakaram Ganesh Deoskar में भी like नाम नहीं सुना, किताब नहीं सुनी, like क्या करेंगे. But then something had happened, but here I lost it. But again सेम लॉजिक से आप काम करो, बात करो, तमीज़ से, शांति से अगर देखो. इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू एग्री सेक्टर, DCCB डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपेरिजन टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक. वेरी अनलाइकली. मतलब इवन द फर्स्ट लाइन पूरी नहीं पढ़ी मैं सिर्फ DCCB तक आके रुक गया कि मैंने कहा यार ये तो क्या होते हैं. मैंने पूरी नहीं पढ़ी और मैंने छोड़ दिया. बट अगर सिर्फ इस स्टेटमेंट पे हम बात करें तो दिस स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली इज रॉन्ग. इट शुड, मतलब एटलीस्ट आई शुड हैव हैड दैट मच कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ दैट इफ आई प्रिपेयर्ड फॉर 5 years एंड हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस. शेड्यूल कमर्शियल बैंक से ज़्यादा तो नहीं दे रहा होगा. एंड बाय दैट फर्स्ट स्टेटमेंट एलिमिनेटेड. फर्स्ट एलिमिनेट कर दिया तो अगेन 50-50 शॉर्ट है, 50-50 तो लेना बनता है. And one of the most important functions of DCCB is to provide funds to the primary agricultural credit societies, which seems likely. Again, short लेने वाली बात है तो 2 only seems much better than neither 1 or 2. It could be neither 1 or 2, but 2 seems more likely. And the correct answer is also here 2 only. So again, even with the 2020 prelims ka paper, we've seen that a lot of these questions can be done with logic, even if you don't particularly know कि क्या है. And if sometimes you lose it, शांति रखो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ information मिलेगी which will help you resolve this question in a manner that gets you +2. Right, so best of luck, and if you have any doubts please do let me know in the comments below.